in every single part of our territory, since our people remain at the heart of our development goals. We are translating that vision into reality. Ladies and gentlemen, for far too long, Agaléga had been relegated to the status of poor parent, and its infrastructural development needs received little attention from central government. The old runway here was constructed in the early 80s. It deteriorated over the years and posed serious risks both for the Dornier aircraft and its passengers and crew. Since 2003, several attempts had been made to upgrade the airstrip, but nothing concrete materialized. You know, when we look at the situation that prevailed in order to get access by sea to Agaléga, which was also severely constrained owing to the inadequate infrastructure and facilities. At the same time, Mauritius had also had to address the growing need to reinforce its capacity and capabilities to ensure a better surveillance and monitoring of its vast exclusive economic zone. There was therefore an urgency to address those infrastructural deficiencies. The help of India was sought, and a memorandum of understanding was signed between our two countries during the memorable visit of Sri Narendra Modi ji to Mauritius in March 2015. That MOU reflected India's commitment to continually assist Mauritius in meeting its development goals. It satisfied the principles of mutual benefit and strict compliance with the sacrosanct principles of sovereignty and territorial integrity. There has never been any agenda for Mauritius to relinquish its sovereignty over the Agaléga Islands, as some ill-minded persons, both in and outside Mauritius, have attempted to make believe. Likewise, there has never been any agenda to transform Agaléga into a military base. Here, I wish to forcefully deplore and condemn the India bashing campaign that some people in Mauritius have fomented. I wish to make it clear, once again, that the agreement between Mauritius and India with regard to the new airstrip and jetty facilities in Agaléga aims essentially at assisting us in upgrading and reinforcing our maritime security. The new facilities will provide the logistic platforms for a more effective surveillance and monitoring of our vast EEZ of 2.3 million square kilometers. We will henceforth be in a better position to initiate counter-piracy, counter-terrorism, counter-narcotics actions, fight human trafficking, and combat illegal, unreported, and unregulated fishing. The facilities will also be of paramount importance for emergency responses, including search and rescue, marine pollution, and humanitarian assistance. Moreover, these new infrastructure and facilities will generate significant economic activities and employment opportunities which, along with the 6 other projects we have inaugurated today, will go a long way
towards improving the quality of life towards those of our Agalean brothers and sisters. This is only the beginning of a bright future for both the North and the South Islands. Ladies and gentlemen, I would like to heartily thank AFCON's rights, their employees, and all other officials from the High Commission of India and my office and the Outer Islands Development Corporation, who worked tirelessly to deliver these two major projects in, I must say, very challenging circumstances. Shri Modi ji, ladies and gentlemen, as I said earlier, a new page in the history of the Republic of Mauritius, particularly of Agaléga, and of the Mauritius-India Special Partnership is being written today. Let me again thank the Government of India and particularly Prime Minister Shri Narendra Modi ji for helping us to realize such major transformational projects which will not only significantly enhance our capacity and capabilities in marine surveillance and security, but also meet our development objectives for the islands of Agaléga. Long live India, long live Mauritius, long live India-Mauritius relationship. Allow me to convey a message in Creole. अगालेगा से मेरे प्यारे हमवतन, आपको मेरा नमन। ये अगालेगा के लिए एक ऐतिहासिक घड़ी है और मॉरिशस गणराज्य के लिए तथा भारत और मॉरिशस के बीच पाए जाने वाले विशेष संबंधों के लिए भी। इन नए मूल ढांचों और हवाई अड्डे से जुड़ी सुविधाओं के माध्यम से बड़े विमान यहाँ पर उतर सकेंगे। साथ ही जहाजों के लिए एक नई जेटी अगालेगा में अब एक वास्तविकता बन गई है। हमें भारतीय सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट करना चाहिए, जिन्होंने हमारी पुकार सुनी और पूरी तरह से इन दोनों परियोजनाओं की फाइनेंसिंग की है। आज डिजिटल कनेक्टिविटी के साथ मॉरिशस और भारत को अगालेगा के निकट लाना संभव हो पाया है। आप सभी ने डिजिटल उद्घाटन में भाग लिया, जो मैंने भारतीय प्रधानमंत्री के सहयोग से किया। यहाँ पर हो रहे विकास को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। मैं सदैव कहता हूँ कि हमारे टापू के चारों ओर विकास जारी रखना चाहिए। गणराज्य के लिए मेरी दृष्टि ये है कि हर एक टापू को विकसित करना। हमारे प्रत्येक हमवतन को उनके जीवन में आगे बढ़ना होगा। उन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अवसर मिलना होगा। उन्हें ये प्रतीत होना चाहिए कि सरकार उनके हित में काम कर रही है और ऐसे मौके पैदा कर रही है जिनके माध्यम से उनके परिवार का और उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो। जैसे कि रोड्रिग्स को परिवर्तित किया गया, अगालेगा में भी मैं ये चाहता हूँ कि मेरे हमवतन अच्छी परिस्थितियों में अपने जीवन बिताने के साथ साथ विकास और बेहतरीन जीवन स्तर के साक्षी बने। हम सभी को पता है कि हवाई और समुद्री कनेक्टिविटी के बिना प्रगति संभव नहीं है। इसलिए ये आवश्यक था कि इन सभी सुविधाओं को कायम की जाए। भूतकाल में कुछ नेताओं ने कई बातें की, परंतु वे इस प्रकार की तरक्की करने में असफल रहे। मुझे गर्व है कि मेरी सरकार के अंतर्गत हमने आपके
सपनों को साकार किया है। अगालेगा उन्नति की राह पर है। अब से वो दिन समाप्त हुए जब कई सप्ताहों तक की प्रतीक्षा करनी होती थी मॉरिशस जाने के लिए और जरूरी सामान प्राप्त करने के लिए। साथ ही नई आर्थिक गतिविधियां भी विकसित की जा सकेंगी जिनके माध्यम से अगालेगा की अर्थनीति बढ़ेगी। जैसे कि रेजिडेंट मैनेजर ने कहा, इन 2 परियोजनाओं को अमल में लाने के साथ साथ कई सामुदायिक परियोजनाएं भी साकार की गई हैं जिनकी प्रतीक्षा यहाँ की जनता कर रही थी। आपके लिए एक पुस्तकालय का गठन किया गया है और इसके माध्यम से आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके विश्व से संपर्क कर पाएंगे। एक बहुउद्देशीय कक्ष का भी गठन किया गया है जिसके जरिए बैठकें लगाई जा सकेंगी। मछेरों के लिए एक लैंडिंग स्टेशन, एक प्रशासनिक दफ्तर और विभिन्न सामानों की बिक्री के लिए एक अधिक बड़ा स्थल, ये सभी सुविधाएं आपकी दैनिक गतिविधियों में काम आएंगी। मैं इस पर भी आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि हम 50 आवास इकाइयों के निर्माण पर भी काम कर रहे हैं। ऐसे कई प्रतिबंध हैं जिनको लेकर समाधान ढूंढना है, परंतु जैसे कि हम कहते हैं कि जब इच्छा हो तो समाधान मिल ही जाता है। मैं आपको ये आश्वासन दे रहा हूं कि हम सभी कोशिशें जारी रखेंगी जिससे कि अगालेगा अपनी देरी को पार कर सके। आप झूठी बातों पर ध्यान मत दीजिए। ये बुरे इरादे वाले लोग हैं जो आपको ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एक मिलिट्री बेस होगा। आप देख सकते हैं नया एयरस्ट्रिप और जेटी मॉरिशन गणराज्य द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर उपस्थित अगालेगा के मेरे हमवतन, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मेरी सरकार आपके हित में काम करती रहेगी। अगालेगा के लिए एक नया भविष्य, आज से हम इसके निर्माण की दिशा में चल पड़े हैं। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। We thank the Honourable Prime Minister of Mauritius for his address. I now invite the Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to deliver his speech. Your Excellency, प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी, मॉरिशस मंत्रिमंडल के उपस्थित सदस्यगण, भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, आज इस समारोह से जुड़े अगालेगा के वासी और सभी साथीगण, नमस्कार। पिछले 6 महीनों में प्रधानमंत्री जगन्नाथ और मेरी ये 5वीं मुलाकात है। ये भारत और मॉरिशस के बीच वाइब्रेंट, मजबूत और यूनिक पार्टनरशिप का प्रमाण है। मॉरिशस हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का अहम भागीदार है। हमारे विजन सागर के अंतर्गत मॉरिशस हमारा विशिष्ट सहयोगी है। ग्लोबल साउथ का सदस्य होने के नाते
हमारी समान प्राथमिकताएं हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे संबंधों में अभूतपूर्व गति आई है। हमने आपसी सहयोग में नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों को नया स्वरूप दिया है। हमारे लोग पहले से भाषा और संस्कृति के सुनहरे धागों से जुड़े हैं। कुछ दिन पहले ही हमने यूपीआई और रुपे कार्ड जैसे प्रयासों से आधुनिक डिजिटल कनेक्टिविटी प्रदान की है। फ्रेंड्स, डेवलपमेंट पार्टनरशिप हमारे राजनीतिक संबंधों का अहम स्तंभ रहा है। हमारी विकास भागीदारी मॉरिशस की प्राथमिकताओं पर आधारित है, चाहे वो मॉरिशस की EEZ सुरक्षा से जुड़ी जरूरतें हो या फिर हेल्थ सिक्योरिटी। भारत ने हमेशा मॉरिशस की जरूरतों का सम्मान किया है। संकट कोविड महामारी का हो या तेल रिसाव का, भारत हमेशा अपने मित्र मॉरिशस के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। मॉरिशस के सामान्य मानवी के जीवन में सार्थक बदलाव हो, यही हमारे प्रयासों का मूल उद्देश्य है। पिछले 10 वर्षों में लगभग $1000 मिलियन की क्रेडिट लाइन और $400 मिलियन की सहायता मॉरिशस के लोगों के लिए उपलब्ध कराई गई है। मॉरिशस में मेट्रो लाइन के विकास से लेकर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सोशल हाउसिंग, ENT अस्पताल, सिविल सर्विस कॉलेज और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भागीदारी करने का सौभाग्य मिला है। फ्रेंड्स, आज का दिन हमारी विकास साझेदारी के लिए एक विशेष महत्व रखता है। मुझे हार्दिक खुशी है कि 2015 में अगालेगा वासियों के विकास के लिए मैंने जो कमिटमेंट की थी, आज हम उसे पूरा होते हुए देख रहे हैं। भारत में आजकल इसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि जिन सुविधाओं का हमने मिलकर लोकार्पण किया है, इनसे ईज ऑफ लिविंग को बल मिलेगा। मॉरिशस के उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ेगी, मेनलैंड से प्रशासनिक सहयोग आसान होगा, सामाजिक और आर्थिक विकास को बल मिलेगा, मेडिकल उपचार के लिए इमरजेंसी इवैक्यूएशन और शिक्षा के लिए स्कूली बच्चों की यात्रा में सहायता होगी। फ्रेंड्स, इंडियन ओशन रीजन में अनेक पारंपरिक और गैर पारंपरिक चुनौतियां उभर रही है। ये सभी चुनौतियां हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती हैं। इनसे निपटने के लिए भारत और मॉरिशस मैरीटाइम सिक्योरिटी के क्षेत्र में स्वाभाविक साझेदार है। इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा
समृद्धि और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए हम सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की निगरानी, ज्वाइंट पेट्रोलिंग, हाइड्रोग्राफी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, सभी क्षेत्रों में हम मिलकर सहयोग कर रहे हैं। आज अगालेगा में एयरस्ट्रिप और जेटी का उद्घाटन हमारे सहयोग को और आगे बढ़ाएगा। इससे मॉरिशस में ब्लू इकोनॉमी को भी मजबूती मिलेगी। फ्रेंड्स, मैं प्रधानमंत्री जगन्नाथ जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने मॉरिशस में जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है। मॉरिशस पहला देश होगा जो हमारी जन औषधि पहल से जुड़ेगा। इससे मॉरिशस के लोगों को भारत में बनी बेहतर क्वालिटी वाली जेनरिक दवाइयों का लाभ मिलेगा। एक्सेलेंसी, प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ जी, आपके दूरदर्शी विजन और डायनेमिक नेतृत्व के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में भी हम मिलकर भारत और मॉरिशस संबंधों को नई ऊंचाइयां दिलाएंगे। मैं फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। A big thank you to the Honorable Prime Minister of India for his address. We have been honored by his participation in this event. We now have come to the end of this joint inauguration of the airstrip of Agaléga, the St. James jetty, and the 6 small development projects. We thank you very much for your attention. Tonight we'll talk about Paytm. If you're in India, I'm sure you've heard of it, and most of you may have also used it. But do you know what it means? Paytm is an acronym. The full form is Pay Through Mobile, Paytm. It pioneered India's digital payment system. It was synonymous with paying by phone. The tagline is Paytm Karo. Paytm Karo. Almost like a slogan. That's how popular this company became. India's most celebrated unicorn, a mammoth fintech giant. But not anymore. Paytm is off to a rough start in 2024. Its payments bank has been given the death sentence. It came from India's central bank, the Reserve Bank of India. It has barred Paytm from banking activities, no transactions, no wallet top-ups, nothing. And it has left many asking, what happened? What is the Paytm story? How did this company grow so big and why did it fall? Hello and welcome. I'm Palki Sharma and this is Between the Lines. जब आप घर बनवाते हैं तब आप एक भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर बुलाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर घर आके आपको बड़े हसीन सपने दिखाते हैं। इतने हसीन सपने देख आप अंदर ही अंदर खुश हो जाते हैं। अंदर ही अंदर खुश होकर आप उन्हें एडवांस पकड़ाते हैं। एडवांस मिलने के बाद वो अपने असली रंग दिखाते हैं। पूरी पेमेंट लेकर भी काम आधा अधूरा छोड़ जाता है। तो भाई साहब, अपने ड्रीम होम को परफेक्ट बनाइए, सीधा हिप्पो होम्स आइए। यहां मिलेंगे आपको 100 से ज्यादा ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स। हिप्पो होम्स, अब घर बनाना सिंपल है। This man is the founder of Paytm. His name is Vijay Shekhar Sharma. Once India's youngest billionaire,
Although he had truly humble beginnings, this is a rags to riches story. Sharma's early education was in a government school. He says he could not speak in English till the age of 15. Now, if you're in India, it can be an impediment to growth. So Vijay Shekhar Sharma says that he taught himself. He went to the Delhi Technological University. After graduation, he could have taken a 10-to-5 job, but he chose not to. He set up something called indiasite.net. It clicked. He sold it for $1 million. Then he rode the dot-com wave. That too was a success. In the year 2000, he took a loan of 8 lakh rupees, around $9,000, to set up a company called 197 Communications. That's the parent company of Paytm. Now, initially, 197 Communications offered digital goods and services. It was doing well, but not well enough for its founder. He wanted more. In 2010, he launched Paytm with an initial investment of $2 million. Sharma wanted to disrupt the market to get everyone to pay by phone. Paytm started off as a prepaid mobile and DTH recharge platform. In 2013, it expanded, adding debit card and postpaid mobile payments. The big breakthrough came 1 year later. In 2014, Paytm introduced the wallet system. It was an instant hit. Indian Railways and Uber added it as a payment option. You could pay your electricity bill, your metro card fees, and your water bill through this one wallet. It was revolutionary. The user base grew rapidly. In 2014, they had around 11 million users. By 2015, around 100 million. So it was gaining popularity and how, but cash was still king in India. In 2016, that changed. India demonetized 500 and 1,000 rupee notes. People were left with no option really. They turned to digital payments and Paytm made the most of it. Demonetization made it a household name and necessity. Digital payments surged. And with this surge, Paytm grew bigger. By 2017, it was a giant, the first payment app with over 100 million downloads. Millions of merchants signed up for it. They became Paytm clients. They were issued QR codes. These codes were linked to their bank accounts. You could scan the QR and pay. No haggling for cash, no waiting for change. It was simple and a game changer. More and more people signed up. Your auto drivers, your repair shops, every business, small and big, was coming on board. By 2021, Paytm had 150 million active users. Every month, the company processed 1.2 billion transactions. It continued expanding, adding other services, like tickets for movies or flights, selling gold insurance, even remittances. Paytm was doing everything. Its investors were happy. We're talking about Alibaba, the Ant Group, and SoftBank. They were the top investors in Paytm. They decided to take the company public. And in November 2021, Paytm launched its IPO in India. IPO is initial public offering when you offer shares in your company to public. And this was the biggest IPO in India's history then. Paytm raised about 18,300 crore rupees. That's around $2.3 billion. At the valuation of $20 billion US. It's like the company had a Midas touch. Everything it touched turned to gold, as if nothing could go wrong, yet everything did when trading began. In 2021, Paytm's IPO share price was 2,150 rupees. That's the price of one share that was offered. On November 18, Paytm was listed on the Bombay Stock Exchange. The share started trading at around 1,950 rupees. So it was already lower by 9%. By noon, it was trading at 1,800 rupees. At the closing bell, it was at 1,560 rupees. So it closed at almost 27% less than the initial offering. It was almost like a crash. 40,000 crore rupees of investor wealth was wiped out in a day. 40,000 crores. आरकू का कहना है कि लगभग 18 हाथी मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है उससे तादाद कहीं ज्यादा होंगे। सर, इंडिया की सबसे बड़ी रेड में 51 किलो आइवरी मिली थी। 75 किलो हाथी के दांत। सर, अभी तक 360 किलो आइवरी मिली है। और इन्हीं बेचारों को मारते मारते इन दरिंदों ने 10.5 नील रुपीस की इंडस्ट्री खड़ी कर दी है। नील क्या? सर, 1 crore crores. It's more than the market cap of several big companies. The IPO was a huge failure. It was also the start of Paytm's unraveling. The company was called a cash guzzler.
Experts and investors were concerned. They were worried about lack of direction. They questioned its scale. They questioned the profitability. Doubts started creeping in, which brings us to the latest saga. The crux of the problem was the Paytm Payments Bank, a subsidiary of Paytm. It came into existence in 2017, the same year it got a banking license. And within months, it faced its first hurdle. The bank got a regulatory strike. It was accused of multiple violations, non-compliance of KYC guidelines. That's a mandatory process of verifying client identity. KYC, know your customer. Plus, day-end balances were breached. So in June 2018, the RBI cracked down. It halted the opening of new accounts. Paytm responded. A compliance report was submitted, and by the end of that year, the ban was lifted. In 2021, things unraveled further. RBI hit Paytm with a fine of 1 crore rupees. They said the bank had submitted false information, and the troubles did not end there. By the end of 2021, RBI found more violations. Lapses in technology, cybersecurity concerns, money laundering accusations, and no separation between the bank and the group's other entities. So the RBI issued a directive. It told Paytm to stop onboarding new customers. It also called for an audit by an external firm. That audit happened. But the RBI was still not happy. They said Paytm was not serious about making amends and they weren't taking corrective measures. So in October 2023, the RBI slapped another fine. This time, the penalty was worth 5.3 crores. So 6 years, multiple warnings and 2 fines. But the company did not fix the problems. By 2024, the RBI had enough. The violations were so serious, they could no longer ignore them. Several accounts lacked KYC, know your customer regulations. It's mandatory for all banks. In some cases, one identity proof was linked to thousands of accounts. There were concerns about fraud, corruption, and money laundering. In some of these accounts, transactions ran up to crores. This was above the regulatory limit. Yet all of it was being allowed. So the RBI issued its latest ultimatum. The deadline is February 29th. After that, Paytm is banned from all banking activities, which leaves the company with 2 big challenges: securing its customers and its lending partners. Paytm users, especially its 40 million merchants, are migrating to other platforms. And the lending partners want nothing to do with Paytm. The RBI ban has made Paytm untouchable. It's a cautionary tale of how giants bite the dust. Paytm grew because it was on top of the curve, easy to use and offered opportunities for everyone. It was, like we said, revolutionary, but it made one big mistake. It took the rule book for granted, and that proved to be its undoing. I guess that's the lesson here. The law catches up, no matter how big you are. और संगठन के तौर पे कई ऐसे देश इसमें भाग ले रहे हैं जिसमें हमें उम्मीद है कि वहां की तकनीक ऐसे भारत को फायदा करेगी। देखिए, अगर कुछ गुजरात में ये जो कंपनी से निवेश करती है, वहां से कोई मॉडल उठकर अगर हम मध्य प्रदेश में लगाना चाहें, तो यही तो इन तरह के जो तमाम वाइब्रेंट समिट्स होते हैं जो निवेश को आकर्षित करते हैं, यही उनका मकसद होता है कि तमाम अलग अलग राज्यों में जब इन समिट्स का आयोजन किया जाता है तो कौन किससे क्या सीखता है। इसी तरह का आयोजन हमने मध्य प्रदेश में देखा है, इसी तरह का आयोजन हमने उत्तर प्रदेश में देखा है, और कैसे तमाम अलग अलग वैश्विक कंपनियां जो हैं उनके लिए भारत को भरता हुआ बाजार है। और जिस अहम रुख पर प्रधानमंत्री हमेशा फोकस करते हैं वो ये है कि यहाँ पर जो युवा शक्ति है, यानी डेमोग्राफी और डिविडेंड है, उसका मुकाबला हम अगर अलग अलग देशों से करें तो कुछ है ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक की जो अभी हालिया रिपोर्ट है वो भी यही कहती है कि किस तरह से भारत 2024-25 है उसमें कैसे प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा अन्य अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि अभी भी जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ये तमाम 2 ऐसे क्षेत्र जिसमें भारत उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। ऐसी अब
बहुत छोटा सा एक एग्जाम्पल ये है कि हम जानते हैं कि टॉय इंडस्ट्री यानी खिलौना उद्योग जो कहीं ना कहीं दम तोड़ रहा था, प्रधानमंत्री के आह्वान से उसका विनिर्माण डबल डिजिट में पहुंच गया। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी हम मैन्युफैक्चरिंग की हम बात करते हैं, उसमें हम डबल डिजिट्स में कई देशों से आगे हैं। और इसीलिए जब तमाम देश यहाँ पर आकर निवेश करने की बात करते हैं, अपनी रकम लगाने की बात करते हैं, उन्हें मालूम है जो पूंजीगत निवेश वो यहाँ पर कर रहे हैं उससे ज्यादा वो लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तमाम बिजनेस करने के रास्ते अब आसान बनाए गए हैं। डिफेंस की बात की जाए, मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, कैपिटल मार्केट की बात की जाए, स्पेस की बात की जाए, ऑटो की बात की जाए, बैंकिंग की बात की जाए, ये तमाम ऐसे वो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जिनमें भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। तो महात्मा मंदिर जो कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर आयोजन किया गया है वाइब्रेंट गुजरात समिट का, और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया, चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है, मोजाम्बिक के राष्ट्रपति का स्वागत किया गया है। और हम जानते हैं कि जो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उनका भी प्रधानमंत्री ने स्वागत किया। ये फॉर्मल फोटो अप यहाँ पर इस बात को दर्शाता हुआ कि इन तमाम देशों के साथ भारत के दोस्ताना, करीबी, द्विपक्षीय अहम रिश्ते हैं। और यहाँ से आते हुए प्रधानमंत्री अब आगे बढ़ते हुए, क्योंकि ये आगे बढ़ना यही दर्शा रहा है कि अब वाइब्रेंट गुजरात अपनी आर्थिक भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए एक नई इबारत लिखता हुआ। कन्वेंशन सेंटर महात्मा मंदिर में प्रधानमंत्री का स्वागत, यहाँ पर जो वहां पर मौजूद लोग हैं जिसमें कई कंपनीज के सीईओज भी हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। It is a great privilege to welcome the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, who had initiated the Vibrant Gujarat Global Summit 2 decades ago. It is our honor to welcome His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Honorable President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi. His Excellency Mr. Jose Ramzorta, Honorable President Timor-Leste. His Excellency Mr. Philip Nyusi, Honorable President Mozambique. His Excellency Mr. Petra Fiala, Honorable Prime Minister, Czech Republic. And we welcome all the esteemed dignitaries. Thank you. નમસ્કાર, સુસ્વાગતમ. આપ સૌનું આજના આ વિશેષ અવસર પર ભાવભર્યું સ્વાગત છે. The banal event, Vibrant Gujarat Global Summit, has turned into a benchmark event globally, and its success can be attributed to various factors, including the state government's proactive policies, infrastructure development, and efforts to attract both domestic and international investors. Participating in this summit holds immense significance as it marks the pioneering event in the Amrit Kaal. On this occasion, we also welcome the Honorable Governor of Gujarat, Shri Acharya Devrat ji, and Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel. Thank you. We shall commence the significant inaugural session with a patriotic song, Jai Jai Garvi Gujarat, which was written by famous Gujarati poet Shri Narmad. The song that highlights the rich heritage, culture, bravery and achievements of the land of Gujarat will be sung by world-renowned Shri Kirtidan Gadvi.
presentation. Over the past 20 years, the Vibrant Gujarat Summit has achieved remarkable success in its development and growth initiatives, thereby transforming Gujarat into an economic powerhouse. Let's have a look at an audio-visual film narrating the success story, that is, Vibrant Gujarat Global Summit. Synonymous with prosperity and growth, warmth and hospitality, innovation and enterprise par excellence. Whose people are committed to the realization of the infinite potential of humankind and wedded to the doctrine of Vasudhaiv Kutumbakam. One earth, one family, one future. A state blessed with the guidance of a visionary who is pioneering India's edition of Vibrant Gujarat Global Summit, distilled by 2 decades of exponential progress that catapulted the state as one of the world's most preferred investment destinations. Gujarat's GDP of $14 billion in 2002 grew to an estimated $282 billion in financial year 2022-23, nurtured by all-round excellence that catalyzed socio-economic growth with inclusivity and unbridled entrepreneurship, led India into Amrit Kaal. Envisioned in the face of adversity by the Honorable Prime Minister Narendra Modi at a time when he was the Chief Minister of Gujarat, the Vibrant Gujarat Global Summit bears on eloquent testimony to the characteristic resilience and the indomitable spirit of Gujarat. Inspired by Shri Modi's vision, the last 20 years have been an unparalleled saga of progress that has witnessed Vibrant Gujarat transform the state into India's growth engine. With unmatched state-of-the-art infrastructure, unsurpassed manufacturing prowess, and unparalleled growth. From farm to fintech, drip irrigation to drones, new age technological advancements in semiconductors and electronics. From a vibrant startup ecosystem to flourishing e-commerce. From India's biggest hybrid energy park to the world's biggest diamond hub and office complex. Vibrant Gujarat Global Summit has elevated the esteem and stature of the state within the country and beyond. Gujarat is fully geared up to spearheading Industry 4.0, heralding the new industrial revolution with human augmentation frameworks and smart manufacturing propelled with the PM Gati Shakti.
a transformative approach for integrated and multimodal connectivity. See the world's tomorrow in the Gujarat of today, where Dholera Special Investment Region, a future-ready greenfield smart city, lays the foundation of modern regenerative economies. India's first bullet train is being built to usher in a dynamic ecosystem by fostering innovation and adaptability. Artificial intelligence, robotics and intelligent supply chain orchestration leverage symbiotic growth paradigm and a future-ready landscape with 80% of India's rooftop solar. To cutting-edge lab-grown diamonds. Epitomize circular prosperity model for holistic sustainable development. It is gearing India's decade as a launchpad for technology and innovation, with new opportunities in semiconductors and electronics, unlocking infinite potential for startups and e-commerce with quantum-resilient infrastructure, shaping the future of fintech and continuing to foster medium, small and micro enterprises with a special focus on enhancing ease of doing business, empowering of women entrepreneurs and creating eco-innovation hubs. Abuzz with green infrastructure integration, Gujarat's commitment to harmonious urbanization is transforming every harbour into a gateway of prosperity. It is transitioning to still greater heights in sustainability with vast spaces of renewable energy, an exciting hub for green energy including green hydrogen, electrolyzers, renewables and EV manufacturing. Gujarat strides forward towards mitigating carbon footprint as a beacon for green solutions and net zero. पिछले 20 वर्षों से अगले 20 वर्ष ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब वाइब्रेंट गुजरात के 40 साल पूरे होंगे, यही समय है जब भारत को एक ऐसा रोड मैप बनाना होगा जो उसे 2047 तक एक विकसित और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में हम उसको दुनिया के सामने प्रस्थापित करें। मुझे विश्वास है आप सभी भी इसी दिशा में जरूर सोचेंगे, जरूर कदम उठाएंगे, जरूर आगे आएंगे। आज वाइब्रेंट गुजरात समिट विश्व के थॉट लीडर्स, इन्वेस्टर्स, पॉलिसी मेकर्स के लिए नॉलेज शेयरिंग का ग्लोबल प्लेटफॉर्म बन गया है। Welcome to the Vibrant Gujarat Global Summit 2024. Welcome to the gateway of a greener earth, richer life, smarter business. Welcome to Vibrant Gujarat 2024, the gateway to the future. Thank you. With the attributes like transparency, inclusivity, efficiency, empathy and accountability, the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, has steered the state of Gujarat towards progress, ensuring equitable development in all the sectors. Under the prudent governance and pro-business policies of his government, Gujarat has made robust progress. We would like to welcome the Honorable Chief Minister of Gujarat, Shri Bhupendra Bhai Patel, for his address.
विश्व नेता और भारत के यशस्वी वड़ा प्रधान तथा वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के प्रणेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रेसिडेंट यूएई, हिज एक्सेलेंसी जोजे रामोस होर्ता, प्रेसिडेंट तिमोर लेस्टे, हिज एक्सेलेंसी फिलिप न्यूसी, प्रेसिडेंट रिपब्लिक ऑफ मोजाम्बिक, हिज एक्सेलेंसी पेत्रा फियाला, प्राइम मिनिस्टर चेक रिपब्लिक, इस समिट के पार्टनर कंट्रीज के माननीय मिनिस्टर्स, विश्व के विविध देशों से पधारे एम्बेसडर्स, गुजरात के माननीय गवर्नर आचार्य देवव्रत जी, माननीय केंद्रीय मंत्रीगण और गुजरात के मेरे सहयोगी मंत्री, मैं आप सभी को गुजरात की धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं। वाइब्रेंट समिट के पायोनियर एंड आर्किटेक्ट आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वाइब्रेंट समिट को बिजनेस ब्रांडिंग के साथ बॉन्डिंग का भी समिट कहा है। आज यहां आप सभी की गौरवमयी उपस्थिति प्रधानमंत्री श्री की इस बात को चरितार्थ करती है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 के खास बनाने वाले 34 पार्टनर कंट्रीज और 16 पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधियों का 130 से अधिक देशों के डेलीगेट्स का भी मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। ग्लोबल इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस कम्युनिटी के चेयरपर्सन, सीईओज तथा सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स का भी गुजरात की धरती में स्वागत है। भारतीय संस्कृति के वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के विचार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने विश्व तक पहुंचाया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हाल ही में संपन्न हुई भारत की G20 प्रेसिडेंसी भारतवासियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि रही है। आज गुजरात ने विश्व व्यापार, वाणिज्य एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रमुख स्थान हासिल किया है। यह आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी के दूरंदेशी तथा कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है। आज हम सब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 को सफल बनाने के विश्वास के साथ यहां एकत्र हुए हैं। 21वीं सदी की शुरुआत में कई चुनौतियों से घिरे गुजरात को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने वाइब्रेंट समिट के माध्यम से आशा की नई किरण दिखाई थी। 2003 में वाइब्रेंट गुजरात जैसे ये विजनरी इवेंट का प्रारंभ करते हुए आदरणीय श्री नरेंद्र भाई ने कहा था, गुजरात कैन एंड गुजरातीज विल। आज यह समिट 2 दशक की असीम सफलता से पूरे विश्व के लिए नॉलेज शेयरिंग तथा नेटवर्किंग का सम्मानित मंच बन गया है। आज हम बड़े गौरव से कह सकते हैं कि आपकी प्रेरणा से ही गुजरात बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट तथा देश के विकास का ग्रोथ इंजन बन गया है। आदरणीय नरेंद्र भाई जी हर वाइब्रेंट समिट में गुजरात के वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट का विजन और नई पहलों की परिकल्पना हमें दी है। आप ही के मार्गदर्शन और नेतृत्व में गुजरात ने इसे भली भांति साकार किया है। गुजरात आप ही के मार्गदर्शन में पॉलिसी ड्रिवन स्टेट बना है। हम हमारी पॉलिसी के प्रति कमिटेड हैं। हम हर कमिटमेंट को ऑनर करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में ग्लोबल फाइनेंस एक्टिविटी शुरू करने का विजन दिया और परिणाम स्वरूप उनके मार्गदर्शन में गिफ्ट सिटी आज वर्ल्ड की अनेक बड़ी फाइनेंशियल और फिनटेक कंपनियों का हब बन गया है। धौलेरा, SIR, साणंद मंडल बेचरा जी का ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, मेडिकल डिवाइसेस तथा बल्क ड्रग पार्क, सेमीकंडक्टर डिस्प्ले फैब उत्पादन, इन स्पेस क्लस्टर, डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग,
ऐसे अनेक उपलब्धियों और विकास के नए कीर्तिमान गुजरात ने वाइब्रेंट समिट की सफलता के फलस्वरूप हासिल किया है। इतना ही नहीं, गुजरात के इस मॉडल से प्रेरित होकर देश के अन्य राज्यों ने भी अपनी राज्यों के इवेंट में समिट के आयोजन शुरू किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के विजन के अनुरूप ही हमने 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम गेटवे टू द फ्यूचर रखी है। यह समिट भारत के अमृत काल का पहला समिट है और यह प्रधानमंत्री जी की विभिन्न राष्ट्रीय प्राथमिकताएं सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, एमएसएमई और स्किल डेवलपमेंट पर फोकस्ड हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि इस वाइब्रेंट समिट के उपलक्ष्य में हो रहे एमओयूज की 50% एमओयूज ग्रीन एमओयूज हैं। क्लाइमेट चेंज की चुनौतियों का सामना करने और पर्यावरण की रक्षा के प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करते हुए ग्रीन ग्रोथ, रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रति हमारी प्रतिबद्धता ये एमओयूज दर्शाती है। आर्थिक विकास पर बल देने के साथ गुजरात सरकार ने हमेशा सोशल सेक्टर डेवलपमेंट और क्वालिटी ऑफ लाइफ पर भी ध्यान केंद्रित किया है। देश के इस अमृत काल में आयोजित हो रहा यह वाइब्रेंट समिट हमारे लिए अमृत भविष्य का रोड मैप तय करेगा। इस अमृत भविष्य के निर्माण में हमारा सहयोग देने इस वाइब्रेंट समिट में विश्व के अनेक राष्ट्र जुड़े हैं। आज की समिट में उद्घाटन अवसर के मुख्य अतिथि हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, प्रेसिडेंट यूएई की उपस्थिति का मैं ऋण स्वीकार करता हूं। आपको कुछ अचानक संयोग के लेकर इस कार्यक्रम के बीच से ही जाने की जरूरत पड़ी है। हिज हाइनेस, आप अपना अति व्यस्त अमूल्य समय निकालकर इस समिट के मुख्य अतिथि रूप में उपस्थित रहे, आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त करना चाहूंगा कि विकसित भारत 2047 को आपके विजन को पूरा करने में गुजरात ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। फिर एक बार आप सभी महानुभावों का वाइब्रेंट गुजरात की वाइब्रेंट समिट में स्वागत है। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय गरवी गुजरात। Thank you very much, Honorable Chief Minister, sir, for your welcome address. As mentioned by our Honorable Chief Minister, sir, our chief guest, His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Honorable President of the United Arab Emirates and ruler of Abu Dhabi, has to leave due to a pressing commitment, but before that, he has graciously agreed to say a few words. We welcome you, sir. Thank you. السلام عليكم. في البداية أشكر رئيس وزراء ولاية جوجرات على هذه الكلمة القيمة، كما أشكر صديقي وأخي العزيز رئيس الوزراء الهندي على دعوته الكريمة لحضور هذه القمة التي أسسها هو شخصيا عام 2003، وأصبحت منصة عالمية لتبادل الخبرات والمعلومات حول تطوير الاقتصاد والاستثمار. وأهنيكم دولة الرئيس بمناسبة مرور 20 عام على هذه الانطلاقة. سيدي، نحن سعداء جدا بالمشاركة مع أصدقائنا في الهند والعالم في هذه القمة لنبعث جميعا ما يسعد شعوبنا ويطور دولنا. كما أشكر المشاركين والمنظمين لهذه القمة، وأتمنى للجميع النجاح
والتوفيق والخروج بنتائج تخدم التعاون والتنمية والازدهار للجميع. شكرا. Thank you, Your Highness. We profusely thank him for his words of appreciation. It is indeed our honor and privilege to have him over here. Our Honorable Prime Minister will see him off and will join us back in few moments. But we shall continue the program. On this occasion, we have with us some eminent captains of industry. We would like to request them to address the gathering and share their insightful perspectives, enriching this prestigious summit with their profound knowledge and vision. We would like to invite Shri Lakshmi Mittal, Chairman, ArcelorMittal, for his address. नमस्कार। प्रधानमंत्री जी अभी हैं नहीं, शीघ्र ही आते होंगे, बट मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, गवर्नर आचार्य देवव्रत जी एंड मेरे साथियों एंड ऑनरेबल डिग्निटरीज, पिछले साल सितंबर में वाइब्रेंट गुजरात की 20वीं एनिवर्सरी पे मैं यहाँ आया था और प्रधानमंत्री जी ने बताया कैसे आइडियाज, इमेजिनेशन और प्रोसेस कंटिन्यूटी के आधार पर इस मेगा ग्लोबल इवेंट को एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड स्ट्रक्चर मिला है। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त ये बताया कि कैसे वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की सच्ची भावनाओं को लेकर भारत की प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी और हर इंटरनेशनल फोरम में पूरे ग्लोबल साउथ की आवाज को भी मजबूत किया है। माननीय मुख्यमंत्री भाई पटेल जी, मैं आपको भी डेवलपमेंट को आगे रखने और इन्वेस्टमेंट्स को आकर्षित करने और एडमिनिस्ट्रेशन को किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। इस बार जनता का होगा बोलबाला, किसकी जीत किसकी हार, किसकी लगेगी नैया पार। Z10 न्यूज पर हम दिखाएंगे आपको चुनाव का बड़ा शंखनाद। बिछ चुकी है बिसात, हो चुका है चुनावी शंखनाद। किस करवट बैठेगा सियासत का ऊंट, नेता नहीं जनता करेगी तय। इस बार जनता का होगा बोलबाला, किसकी जीत किसकी हार,